ये था बागा बीच तो हो गया। अभी आई एम मूविंग टूवर्ड्स कलंगुट बीच एंड उसके बाद आई विल गो टू कैंडोलिम बीच। सो लेट्स गो। So here we are on Kalangut beach. तो ये रहा कलंगुट बीच। यहाँ पे क्राउड यहाँ पे भी ज़्यादा है, बट आई गेस बागा से भी ज़्यादा है यहाँ पे, और सिमिलर टू बागा बीच ही है। एक्चुअली ये दोनों बीच कनेक्टेड ही है एक दूसरे से। वो सामने रहा बागा बीच और ये है कलंगुट बीच। यहाँ पे भी आपको शैक्स मिलेंगे। इनफैक्ट बहुत सारे शैक्स अवेलेबल है यहाँ पे आप बैठ के चिल मार सकते हैं। कलंगुट के बाद अब मैं जा रहा हूँ कैंडोलिम बीच, जो कि यहाँ से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। सो आई हैव अराइव्ड ऑन कैंडोलिम बीच। देखते हैं अभी ये कैसा है। मैंने तो बहुत सुना है इसके बारे में। So this is कैंडोलिम बीच। ये भी काफ़ी सुंदर और क्लीन बीच दिख रहा है। हालांकि यहाँ पे भी क्राउड बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्लीन बीच है। कैंडोलिम बीच देखे हो गया। अभी नेक्स्ट लोकेशन है अगोड़ा फोर्ट। तो अभी अगोड़ा फोर्ट के लिए निकलते हैं। तो ये है अगोड़ा फोर्ट।
सो इस फोर्ट के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। सो ये फोर्ट जो है वो एक्चुअली एज अ जेल भी यूज़ किया जाता था इन द रूल ऑफ पोर्तुगीज़। सो ये है जेल वाकई में। और इस फोर्ट की हिस्ट्री भी और ऑलमोस्ट 400 साल पुरानी है। इट वाज रूल्ड बाय पोर्तुगीज़ इन 17th सेंचुरी। ये लाइट हाउस है, सोलर सिस्टम। बैक टू हॉस्टल। तो डे 2 अभी मैं बाहर निकल गया हूँ। वाटरफॉल है, हार्विलेम वाटरफॉल, उसकी तरफ। तो चलो। सो अभी मैं आया हूँ हार्विलेम वाटरफॉल की तरफ, और यहाँ पे एक शिवा का मंदिर है। तो गाइज़ ये है हार्विलेम वाटरफॉल। गोवा के काफ़ी इंटीरियर साइड में आता है ये वाटरफॉल। जहाँ पे मैं रुका हूँ वहाँ से लगभग 35 किलोमीटर डिस्टेंस पे ये वाटरफॉल आता है। ऑब्वियसली वर्थ विजिटिंग वाटरफॉल है ये। सो गाइज़ थोड़ा रेस्ट कर लिया। अभी मैं जा रहा हूँ चापोरा फोर्ट की तरफ, और उसके बाद जाऊँगा मोर्जिम बीच टुवर्ड्स एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ गोवा। सो लेट्स गो।
ये है फोर्ट। अभी कुछ बाकी नहीं रहा है इस पर। थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। ये फोर्ट मुस्लिम किंग आदिल शाह ने बिल्ड किया था। उसके बाद पोर्तुगीज़ ने उसको एक्वायर किया था। और ऑल्सो ये फोर्ट आप जानते ही होंगे, दिल चाहता है कि एक फेमस सीन के लिए बहुत फेमस है। कितनी खूबसूरत जगह है। It's beautiful. You know what? हमें हर साल कम से कम एक हफ्ते के लिए गोवा आना चाहिए। Definitely. Kiss it. सो फोर्ट के ऊपर से ये वागातोर बीच काफ़ी सुंदर दिख रहा है। बीइंग सैटरडे बहुत पब्लिक है आज। तो लास्ट मोमेंट पे प्लान चेंज हो गया। अभी मॉर्निंग में गया मैं, फिर से भागा आया हूँ। नाइट लाइफ एक्सपीरियंस करने गोवा का। So here we are back to the hostel.